वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक मैंने आप लोगों के साथ कुछ एंटोनिम्स प्रैक्टिस किया था। टुडे आई एम हियर विद अ पैसेज ऑफ क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बीट बैंक बीट एसएससी दोनों ही एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोगों को क्वेश्चंस मैं दूंगी। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट यू हैव टू आंसर, पहले आप लोग आंसर करोगे एंड आफ्टर दैट आई विल डू द डिस्कशन एंड आई विल एक्सप्लेन कौन सा ऑप्शन हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, जो चलो लेट अस स्टार्ट द सेशन। तो आई थिंक स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल और सारे ऑप्शंस भी आप लोगों को क्लियरली विजिबल है, कुछ इशू नहीं हो रहा है। ओके फाइन, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 1, हर हर गैप में देखो रेड कलर से मैंने उसको वाटर मार्क कर दिया है और आपको नंबर्स के साथ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन 1 का यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं। ठीक है, 30 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, 1 मिनट नहीं लगना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर बताइए एंड देन विल डिस्कस द आंसर। ठीक है, सॉल्व करो। Okay, let us discuss. So the question says, as the country embarks मतलब moves on planning dash the 12th plan of 2020 sorry 2012 to 2017 period. Okay, so as the country embarks on planning on, against, for, onwards or at. ठीक है, तो they are planning when you do something, you do for something. Okay, there is a purpose behind it. So but obvious our correct answer will be option number 3, the preposition for will be the correct answer. Okay, on यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि on मतलब when you indicate on the surface. Okay, against तो यहाँ पे है नहीं, embarks है मतलब उस direction पे वो काम कर रहे हैं, तो ये भी illogical हो गया। ठीक है, onwards तो when we indicate the beginning of something. Okay, so this is again very illogical. at मतलब होता है when we indicate a spot, so यहाँ पे at भी गलत हो गया। ठीक है, our correct answer is option number 3. moving ahead to the next question, question number 2 on your screen. इसका आंसर बताइए आप लोग।
Okay, so question number 2 says, so for the first thing was, as the country embarks on planning for the 12th plan 2012 to 17 period, a key question mark dash hangs over the process. Where hangs, where is used for what, where is used for place, so we are talking about a process, so where to nahi hoga, theek hai, that will be the correct answer. Yes, that hangs, because what, we have already specified the thing, we are talking about a particular key question. So when something is specified, what do we use, we use that, ठीक है, that is always used for specification, to specify something, ठीक है, चाहे ये ऑब्जेक्ट हो चाहे ये कोई पर्सन हो, जब हम स्पेसिफिकेशन इंडिकेट करते हैं हम क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं, ठीक है। वेयर इज यूज्ड फॉर प्लेस, ओके, इनसाइड का तो यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं है, और ऑलवेज का भी यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं है, वी नीडेड अ रिलेटिव प्रोनाउन हियर, एंड इनसाइड एंड ऑलवेज आर नॉट रिलेटिव प्रोनाउन, वी आर कनेक्टिंग टू पार्ट्स, तो हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन का जरूरत है। हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, बट दिस इज यूज्ड व्हेन वी इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, एंड इवन इफ द सब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड वी यूज दैट इन दैट सिचुएशन, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर दैट हो जाएगा। ओके फाइन, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। Okay, now let us discuss. So the statement says, growth is energy hungry. Okay, and the aspiration of growing. See, whenever we talk about growth, growth always requires energy. When you want to upgrade yourself, when you want to grow somewhere, you always have to put efforts, you always have to put energy. If you are not putting efforts, if you are not putting energy, then it's very difficult to get growth and success. So growth is always what, energy hungry. It needs that hunger, it needs that passion, that where you are working for that growth. Okay, so growth is energy hungry, and the aspirations of growing, ठीक है, aspirations
aspirations means the thought, the wish, the demand of growing at 9 to 10% will dash huge demand on the energy resources. Will replace will not be the correct answer. Place होने से correct होता. अच्छा हाँ, we have place. Replace तो definitely incorrect. Okay, forward will bring forward. If the structure would have been will bring forward, it would have been correct. But यहाँ पे देखो will के बाद यहाँ पे आगे forward, ठीक है, will bring forward होना चाहिए. bring word दिख नहीं रहा है, इसलिए सिर्फ forward तो नहीं लिखेंगे. subject भी हो सकता है, but subject should be followed by to, and यहाँ पे हमें to नहीं दिख रहा है. डायरेक्ट हमने यहाँ पे huge demand देख लिया है, तो this is incorrect. demand तो होगा ही नहीं क्योंकि आगे already demand लिखा ही हुआ है. will place, okay, will ask for, will require huge demands on the energy resources of the country. Okay, so this will demand a huge it will put a huge demand on the energy resources, because then only the growth will come. Okay, now moving ahead to the next question. Question number 4 on your screen. ठीक है, question number 4 का आंसर बताइए आप लोग. Okay, now let us continue. So the question says, next statement says, in this energy jigsaw means the puzzle, the haphazard way of moving upwards and downwards continuously, renewable energy will dash like never before. Will light pass, public, feature or find? It is going to shine. Okay, so it is going to shine, that means it is going to come forward. Okay, so it is going to come forward, that means it is going to feature. Okay, light में आपको confusion हो सकता है, but light is not the correct word. Okay, it will shine, it will come out with flying colors, that we can use, but we cannot directly use the word light. Pass is illogical here, public and find is also illogical. So it's going to feature, it's going to showcase itself as one of the greatest thing that has come up. Okay, will feature like never before in the 12th plan and dash. Okay, and dash, that means next question. Question number 5 on your screen, kindly answer.
ओके, नाउ लेट अस डिस्कस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, जैसा हमने लास्ट देखा, रिन्यूएबल एनर्जी विल, क्या था लास्ट क्वेश्चन? हाँ, विल फीचर लाइक नेवर बिफोर इन द 12th प्लान एंड अर्लियर. अर्लियर नहीं, आगे आने वाले टाइम की बात हो रही है ना, आगे के जो प्लान्स होंगे. तो अर्लियर मतलब तो प्रीवियस हो गया, फर्दर होना चाहिए ना, तो अर्लियर हो गया. एंड लाइकवाइज, पब्लिसिटी का तो कोई लॉजिक ही नहीं है. नेक्स्ट एंड आफ्टर, अब देखो ये जो लाइकवाइज है, नेक्स्ट है एंड आफ्टर है, यहाँ पे ये तीनों ही एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है. बट अगर हम लाइकवाइज यूज करते तो इसमें हमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि हमें ये समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट और आफ्टर जो आने वाला है वो उससे सिमिलर जो हो, मतलब उसके सिमिलर और कुछ हो जो अभी करंट में रनिंग है या आने वाले टाइम पे होगा. तो लाइकवाइज विल बी द ब्रॉडर कंसेप्ट जिसमें ये नेक्स्ट और आफ्टर, जिसका मीनिंग अल्टीमेटली सेम है, ये दोनों ही कवर हो जाएगा. तो इसलिए हम नेक्स्ट और आफ्टर नहीं लिख के लाइकवाइज लिख देंगे, बिकॉज लाइकवाइज मतलब का इंडिकेशन हो जाएगा इन द करंट सिनेरियो ऑल्सो, और लाइकवाइज का इंडिकेशन इन द नियर फ्यूचर वाला सिनेरियो भी हो जाएगा. तो इट विल बेसिकली बी एप्लीकेबल फॉर बोथ. तो इसलिए वी विल प्रेफर लाइकवाइज. अदरवाइज नेक्स्ट और आफ्टर तो हो ही सकता था और दोनों तो सिनोनिम्स ही है, किसको सिलेक्ट करते, ठीक है. तो इसलिए इट्स बेटर वी सिलेक्ट द लार्जर कंसेप्ट दैट इज लाइकवाइज. ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन. चलिए इसको सॉल्व करिए.
Okay, so let us discuss the next question. So the question says, by the rule of the thumb India, okay, will dash about 100 gigawatts, 10,000 megawatts of capacity addition in the next 5 years consume waste का तो यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं है. We are talking about a plan, so it has to be concrete and we are talking or it we are taking it on a positive note, so definitely waste तो होगा नहीं. ठीक है. रिक्वायर, हाईलाइट एंड जनरेट. हाईलाइट का भी कोई लॉजिक ही नहीं है. अब कंजम्पशन भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट भी हो सकता है, जनरेशन भी हो सकता है, बट कंजम्पशन एंड रिक्वायरमेंट इज कंप्लीटली अनसर्टेन फ्यूचर. आई डोंट नो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी एंड इन what quantity will be needed and what quantity it will be consumed. It is completely dependent upon the requirement in the near future, so we take it perpetual. Okay, so since we are taking it in a perpetual manner, so these two options will be illogical. Correct answer will be generate, because we are talking about a concrete plan, what is going to be executed in the near future. So when we are talking about a concrete plan that is going to be executed in the near future, so the data has to be accurate. And based on that data, we cannot completely, we can see that there is a demand and we will supply that. I know how much I can supply, how much I can manufacture the thing, but I don't know how much is the requirement in the market. I just see that there is a requirement, but exact amount, see it's written na, we have an exact amount, exact data kaha gaya, 100 gigawatts. Okay, so exact data itna hi consumption hoga, this much is only required. How can you assume that? When you are talking about public, the data may vary, you can take approximation, you cannot give a concrete data, but as a manufacturer you can give a concrete data that this will be the production that I am going to make, right? So demand, okay, according to the demand I can produce the thing, but I cannot assure that the amount of thing I am producing, the exact amount it will be sold or consumed in the market, because that is, as I told you, it's perpetual, it may vary. Okay, and it will vary definitely, because when it comes to public you cannot assure anything, because there are variations, there are variations in the requirement of the public, the demand of the public. So yes, the correct answer will be option number 5, generate. Okay, moving ahead to the next question. Question number 7 on your screen, kindly answer.
Okay, let us discuss the next question. So next question says, encouraging trends or energy efficiency, that means the how efficiently this energy is going to work, and sustained dash by some part of the government, डेवलपमेंट्स हो सकता था, डेवलपमेंटल्स का तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर इज इलॉजिकल, एफर्ट्स, प्रोजेक्शन और प्रैक्टिसेस. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉलिसी, the process that is going to work in the near future, and since it is a project that is going to be executed in the near future, it needs to be a projection. Efforts are so definitely there, but this is projection, how the government is planning, in what quantity the energy will be produced, in what quantity it will be consumed, etc. So there is a projection regarding that. So our correct answer will be option number 4. Okay, moving ahead to the next question. Question number 8 on your screen. Okay, kindly answer. Abhi. Okay, now let us discuss question number 8. So the next question says, the Bureau of Energy Efficiency in particular needs to be completed, okay, or sorry, complemented. Actually this is complemented, ये I capital में हो गया है. I think ये आप लोगों ने decode कर लिया होगा. For this have led to substantially lesser energy intensity of economic growth. However, even the tempered demand numbers, okay,
are dash to be below 80 gigawatts. ठीक है, so this is expected, not unexpected, and unlikely, unsure is illogical, so likely. Okay, it is likely to be below so and so. This is what we are assuming, this is what the projection is assuming. Okay, so this will be the correct answer. Okay, अच्छा, since we are running out of time, class end करने का समय हो चुका है, so we have to stop here. No worries, we are going to continue the passage. जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन पे कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट हो जाता है तो विल स्टार्ट ऑफ विद अ न्यू टॉपिक ऑल्सो. तो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं. सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन रिसीव नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द क्लासेस दैट वी हैव अलाइंड फॉर यू. ओके, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड अगर आप लोगों को क्वेश्चंस करना है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. फिर उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी. ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दोगे तो आई विल आल्सो गेट टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा टॉपिक पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. ठीक है, चलो तो आज का सेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं. अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा. टिल देन, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू ऑल.